Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is a very special class that I have arranged specially for recording about HMMs. And the language that I'll be using for this lecture will mainly be English, but I'll continue to switch between English and Urdu so that we're able to understand the basic concept and the reason behind HMMs, why they were so popular, why they are so famous actually even for today, and the different applications, the three important steps of for SMMs, and the possible reasons or places where you could actually use HMMs for kind of the three different applications that you can use, the three different algorithms that are very important and interesting in HMMs. I discuss those, what they are, what they do, what each of it does. बेसिक जो इसमें आप इस लेक्चर से आप गेन करेंगे वो ये है कि HMM को आपने कब और कैसे अप्लाई करना है. So remember the two questions: when and how you're going to apply HMMs, right? तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए we'll move on with the lecture, and in the lecture I'll be giving you examples from a very good paper, HMM paper, which is by Rabiner et al. मैं रेबिनर एट ऑल के पेपर को रेफर करूंगा. 1989 का पेपर है, वो आपसे शेयर भी करूंगा. ठीक है, इट इज काइंड ऑफ ट्यूटोरियल ऑन सिग्नल प्रोसेसिंग, लेकिन उसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसे जिस तरह से एचएमएम को एक्सप्लेन किया हुआ है, वी यूज दैट. So let's get on with this lecture and let's quickly wrap up the HMMs for you. Okay. ये वो रेबिनर का पेपर है. I'll upload it as well for you. ठीक है, tutorial on HMM or hidden Markov models and selected applications in speech recognition. तो speech recognition के हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है हम speech recognition वाला पार्ट उसका कवर नहीं करेंगे. That is out of scope for us. हमारे लिए इम्पोर्टेंट बात है कि HMM को कैसे शो करता है, कैसे डिप्लॉय करता है. अच्छा, तो let's get to the basics first a little bit. ठीक है, मतलब basically let's say अगर हम थोड़ा टाइम लगाएं HMM के बेसिक्स के ऊपर, ठीक है, that would be the best and most क्या कहते हैं achievable thing at the moment. So what is an HMM? Simple as that. ठीक है, HMM के लिए बेसिक्स क्या होंगे? बेसिक्स ये है कि the periods for learning HMM और hidden Markov models. Markov जो है वो एक रशियन साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ मॉडल्स दिए, उसने कुछ चेन्स दी. ठीक है, तो Markov chains, Markov models, हम ये दोनों लफ्ज यूज करेंगे. और मार्कov चेन होती क्या है, और फिर उससे मार्कov मॉडल कैसे बनता है, और फिर उसमें हिडन क्या है, ये these will be the focus of our lecture. So let's start with the very basics of HMM, यानी कि simple probability. ठीक है, I hope you have already studied what probability is, what it means, what it stands for. Probability is simply एक इवेंट है, उसके अक्सर होने का चांस क्या है. ठीक है, मसलन एक अगर आप एक very simplest example let me see. Coin toss. ठीक है, एक आप coin toss करते हैं, उसके two faces हैं. You can either get a head or a tail, assuming कि ज़ाहिर है coin खड़ा नहीं हो जाता बीच में. So there's also possibility of that कि दोनों में से कुछ भी ना आए, right? तो अगर हम coin के तीनों possibilities देखें, which is slightly different from what a typical coin does. मतलब typical coin में head या tail आता है. ठीक है, in this case हो सकता है coin खड़ा भी हो जाए. तो आपके पास तीन possible outcomes हैं. One outcome is the coin will rest down on heads as the top. The other possibility is tail at the top. The third possibility now is a coin that is standing. Assuming that equal probability है, it's a fair coin, all three things can happen in a fair manner. Overall probability of getting either of these events is 1/3, right? अच्छा, ये तो सिंपल प्रोबेबिलिटी थी, बहुत आसान सी चीज थी, आपने देखी भी है. इससे थोड़ा सा एडवांस फॉर्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाती हैं. डिस्ट्रीब्यूशंस में बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और इट्स अ वर्ल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस जो ऑलरेडी आप देख चुके हुए हैं. तो दोस टू मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं और प्रोबेबिलिटी क्या है, दिस इज व्हाट इज द प्रीरेक फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप कि वो आपको बिल्कुल क्लियर है एंड यू आर एब्सोल्युटली फाइन विद the concept of distributions, what they mean. ठीक है, distribution का simple सा ये है कि let's say keep on tossing the same coin again and again and again, और वो हमें जो है वो it will give us a
list of let's say heads and tails, ठीक है, head tail head tail mix है, something like that. तो अगर एक fair coin है which is getting heads and tails in क्या कहते हैं इक्वली, उसमें बायसनेस नहीं है, उसमें हम किसी एक तरफ उसको लोड नहीं किया हुआ, उसमें किसी एक फेस को हम प्रेफर नहीं कर रहे या उसमें प्रेफरेंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, अगर टू वो फेसेस दे रहा है, लेट्स से नॉट स्टैंडिंग इन द मिडल एट ऑल, तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि उसमें हेड्स टेल्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है. सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सेलेक्ट अ नंबर बिटवीन 1 and 100 वेयर जो है वो मीन की तरफ, मीन यानी 50 की तरफ जो है ना, आपका झुकाव ज्यादा है, जो एल्गोरिथम है वो 50 की तरफ ज्यादा आता है, यू विल ऑब्जर्व नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. नॉर्मल इसलिए जितने भी नंबर्स आएंगे उसका जो मीन है ऑफ कोर्स 50 पे होगा, लेकिन इट वुड बी 100 और 1 के ऊपर जो है सबसे कम वैल्यूज होंगी, 99 और 2 पे उससे थोड़ी सी ज्यादा पॉसिबल है. अगर इफ यू गॉट एनफ एक्सपेरिमेंट्स, लेट्स से अ मिलियन एक्सपेरिमेंट्स, तो मिलियन एक्सपेरिमेंट्स के बाद यू विल ऑब्जर्व कि आपका मीन के ऊपर 50 के ऊपर मैक्सिमम वैल्यूज हैं 51 एंड 49 पे इक्वली, लेकिन उससे थोड़ा सा सेकंड नंबर पे, थर्ड, फोर्थ, तो वो जो डिस्ट्रीब्यूशन है इट वुड बी अ समथिंग लाइक दिस. इसको हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. सो ऑन एंड सो फोर्थ, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या आप ऑलरेडी स्टैटिस्टिक्स के कोर्स में पढ़ चुके हुए हैं. आई एम नॉट गोइंग टू डिटेल ऑन दैट एनीवे. सो वी क्विकली मूव ऑन टू प्रोबेबिलिटी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई, एंड आई होप यू गॉट एनफ कंट्रोल ओवर देम so that I don't have to, you know, go again and again over it. So what is the most important thing for the next part, which is the Markov chains? अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे थोड़ा सा करते हैं, and that question will kind of make you realize the importance of Markov chains. अभी डिस्ट्रीब्यूशन में देखा आपने, कहा जी कि आप पॉइंट टॉस कर रहे थे और उसमें एक पर्टिकुलर चीज ऑब्जर्व हो रही थी, ठीक है, हेड टेल हेड टेल हेड टेल. लेट अस सपोज नाउ that we have a fair coin, एक fair coin है, और उसमें the question to you is what is the probability कि अगर हम उसको 7 दफा consecutively उछालें तो आपको head tail head head tail head tail, ठीक है, ये ऑब्जर्व होगा, let's suppose, ठीक है. तो टेक अ स्मॉल एग्जांपल. मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि हेड टेल हेड टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन कि हमारे पास जो कॉइन है वो फेयर कॉइन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है. सो द क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. इसको मैं बेसिकली ऑब्जर्वेशन कह देता हूं, ठीक है, टू कीप थिंग्स शॉर्ट. सो O is H, let's put it like this, head head tail head and tail, ठीक है. So this is our observation and then I can simply rub it out, ठीक है, और rub करके I can actually write over here simply probability of observing O given a fair point where O is basically this particular sequence, ठीक है. अच्छा, ये बड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. थ्योरेटिकल क्वेश्चन इस सेंस में कि आपसे सिंपल एक चीज पूछी गई, फेयर कॉइन है, उसमें O को ऑब्जर्व करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आप क्या कहेंगे? यू बेसिकली गोइंग टू से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग H ऑन द फर्स्ट डे, on the first coin toss, what is the probability of observing T on the second coin toss, head on third, head on fourth, tails on next, head after that and tails after that. तो इसका बड़ा आसान सा है. एवरी टाइम द कॉइन इज टॉस्ड इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली, इसका पिछली ऑब्जर्वेशन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो द आंसर वुड बी, पहली दफा जब आपने कॉइन टॉस किया उसका 0.5 प्रोबेबिलिटी थी, दूसरी दफा फिर 0.5 है, क्योंकि फेयर कॉइन है उसमें 0.5 होगी, राइट. सो 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5 into 0.5 gives you the probability of observing this particular sequence, ठीक है, exactly this sequence for the first 7 times, right. आसान सा सवाल है, हम सिंपल क्या किया, हमने एक इनिशियल प्रोबेबिलिटी निकाली है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, each coin toss is independent of the previous coin toss, right. क्योंकि ये ट्रू है, therefore हम बेसिकली इसको इस तरह से करेंगे. अच्छा,
let me just adjust this a bit better for you so that ये जो आपको screen है ज़्यादा बेहतर नजर आए, ठीक है? I can maybe lift it a bit more up, or then we're going to talk about this part. Let's bring it in the center. Let's try to lift it up. I hope ताकि आपको जो है ये बिल्कुल clearly visible हो, and there is no discrepancy in this. अच्छा. In the meantime, you can actually try and have a a better understanding of थोड़ा सा probability के ऊपर ज़रा जोर दें. This is going to be more focused on probability क्योंकि हम HMM जो है probabilistic method है, ठीक है? It is heavily relying on probability. It was very famous and it is still very commonly used. तो लिहाजा हम थोड़ा सा जो है वो इसको we'll keep things in focus. So I hope it's much clearer at the moment. Acha, let's see what is visible to you and what we want to do. Okay, maybe lights are here. So we can switch these ones or these ones. Okay, and I'll want to have some more light over here. I want more focus on this side. ठीक है जी. अच्छा, तो हमने ये देखा अभी तक कि हम एक्चुअली जब इस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो here is this P. Probability of observing this particular sequence from a fair point is 0.5 and 0.5 and 0.5 and 0.5 and 0.5 and 0.5 and 0.5, which is basically saying that for the first 7-day point tosses, the probability of observing this sequence from a fair point is this much. आसान सा है, तो think of it. अच्छा, अब ये तो हमने theoretical bookish example है. Let's go to a very advanced, very difficult example, a very publicly. मतलब advanced में इसको नहीं कहूँगा, difficult भी नहीं कहूँगा. It's basically a public example, ठीक है? And that is the exact example जो कि यहाँ पे इसने जो है वो it starts off with point tosses and it goes on to क्या कहते हैं? It probably goes on to urns and other things as well, ठीक है? लेकिन मैं अभी एक एग्जांपल और देना चाहूंगा before I move on to the particular paper, ठीक है? So that you have a bit of a background on it. अच्छा, छोटा सा केस और लेते हैं. What is the probability of observing basically a particular sequence of days on, let's say, 5 consecutive days? मतलब क्या है सवाल का? मतलब ये कि for example you know के being cloudy on a particular day is a particular probability, being sunny on a particular day has a particular probability, and being rainy on a particular day has another probability. Just like coin toss में possible outcomes आपके 2 हैं, इस केस में possible outcomes हमने 3 कर दिए, ठीक है? तो assuming of course coin toss में मैंने आपसे कहा कि coin खड़ा होना भी अगर आप कंसीडर करें तो फिर आपके possible outcomes 3 हो जाएंगे, otherwise आपके 2 possible outcomes. तो let's come to this point कि अगर आपके 2 possible outcomes हैं तो 2 possible outcomes में we need to talk about जो 2 हैं तो possibly आपके पास है तो लिखा जाएगा. अब 3 हो गए तो you can have sunny, rainy, cloudy, S, R and C, the 3 letters, ठीक है? So what is the probability of observing, let's say, I think marker again, G. So what is the probability of observing, let's say, sunny, rainy, sunny, sunny, cloudy, sunny, basically, ठीक है? So O का मैंने सिर्फ change किया है and given basically what are you given? So we want to find the probability of, let's say, इसको मैं D के बजाय इसको मैं basically weather कर देता हूँ. So weather की W use कर रहा हूँ variables, ठीक है? I'm just using W variable for weather. So what is the probability of observing particular type of weather given the probability distribution of particular weather, ठीक है?
तो हमें बेसिकली एक खास किस्म के वेदर का एक डिस्ट्रीब्यूशन मालूम है और हम मालूम करना चाह रहे हैं इस खास सीक्वेंस के फिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। लेट्स से हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग S with this particular distribution is, let us suppose, 0.5. So 50% of the day it's sunny. Probability of observing cloudy in Pakistan is, let's say, इसको ऐसा कर लेते हैं, इसको 0.6 कर लेते हैं, mostly it's cloudy. A few of the times, let's say 0.3% of the time it's cloudy, and probability of observing a rainy day, that is going to rain the whole day, it is going to be 0.1. ठीक है? Of course, you know कि इसका sum जो है 1 आना चाहिए, so this is already going towards that. मैं quickly इसमें ये बताना चाहूँगा कि this is exactly the same as the previous problem. The only difference here is now we have got 3 outcomes. यहाँ पे पिछले में हमारे पास head or tail fail point के case में was 0.5 and 0.5 each. In this case, it's now slightly different, but the process is the same. The probability of observing a weather for each of these days, where notice this thing, notice the word I'm using. With each of these events, S, C, and R are independent. हर एक नया दिन एक independent day है, उसका पिछले दिन से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर ऐसा true है, तो फिर the answer is simply taking a product of 0.6, 0.3, 0.6, 0.1, 0.6, 0.6, 0.3, and 0.6 will give you the probability for this observing this weather. ठीक है, आसान काम है, आसान चीज करते हैं, that's the whole thing. अच्छा, यहाँ पे मैं continuously चीज यूज कर रहा हूँ in both of these examples. अच्छा, यहाँ पे अगर fair point ना होता, let's take another example, fair point ना होता, let's say it's a biased point towards head, जो कि 0.9% of the times head देता है, ठीक है? So the answer to this then would be head की 0.9 probability है, tail की probability 0.1 है, so 0.9 into 0.1 into 0.9, again सिर्फ probability की distribution बदलेगी अगर आप point change कर देते हैं, जिसको एक साइड पे bias करते हैं, अगर आप इवेंट्स बदलते हैं तो भी प्रोबेबिलिटी बदलती है, ठीक है? सो गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके हिसाब से वी हैव टू सेलेक्ट एंड वी हैव टू अप्लाई ओवर हियर. तो ये तो आसान चीज थी, हमने इंडिपेंडेंट इवेंट्स लिए, हम उनके दरमियान वो एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक काम निकाल दिया. What about the case where these are not independent anymore? ये कैसे हो सकता है? ऐसे होता है कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अगर पिछला दिन सनी था, if the previous day was sunny, then the next day is also going to be sunny in Pakistan. ज़्यादा chances ये हैं कि अगला ये एक certain probability है कि अगला दिन भी sunny होगा, ठीक है? That is quite true actually. और मजे की बात ये है कि if it says sunny one day, then there is a higher probability of being cloudy next day than being rainy, ठीक है? Or then the other thing is that if it is cloudy one day, then there is a high probability that the next day is going to be rainy instead of being sunny, and so on. तो अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो हर इवेंट है, जो पॉसिबली इसमें डे है या कॉइन टॉस है, वो डिपेंड कर रहा है प्रीवियस चीज के ऊपर. प्रीवियस क्या आती है उसके ऊपर डिपेंड करेगा. सो लेट अस सपोज इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो कि प्रीवियस डे जो था अगर रेनी था, अगले दिन की सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विल डिपेंड ऑन, अगर हम कहते हैं ना कि आज के दिन सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, विल हैव टू सी कि प्रीवियस डे क्या था, उसके हिसाब से विल डिसाइड. अच्छा, इसमें एक बड़ा अजीब सा सिलसिला है. व्हाट अबाउट द फर्स्ट केस, पहले दिन सनी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दिस इज अनदर थिंग दैट इज अननोन, ठीक है ना? तो अभी तक हमने जो देखा, हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स देखे. इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि तो पिछले दिनों पे डिपेंड है, पिछली पॉइंट टॉस पे डिपेंड नहीं कर रहे थे. सो दैट वाज आवर मेन गोल. द प्रीवियस इवेंट्स आर the current event is independent of the previous event. It does not depend on any of the previous events. So that's the main take-home message from here. Acha, but you moved on and you said, "Nahi ji, we want to see this thing in short, in writing. Okay, what if the next event or the current event is dependent on the previous event only? It's on the occurrences of previous events. In this case, हम कह रहे हैं कि सिर्फ अपने एक previous event पे depend कर रहे हैं, ठीक है? You could basically say कि previous 2 occurrences पे depend कर रहा है या previous 3 पे depend कर रहा है, and so on. In which case again the starting probabilities will have to increase. अगर आप कहते हैं previous 2 पे depend कर रहा है, तो इसकी probability के लिए you need to say कि अगर previous event ये है और उससे पिछला में मालूम ना हो, उसकी probability क्या है. And if it is the starting
in with a sunny day the probability is this, ठीक है, जो आपको गिवन होनी चाहिए, तभी आप मालूम कर सकते हैं. तो such a thing is called a first order Markov chain. Markov chain से मेरा मुराद क्या है यहाँ पे, I'll explain that and then I'll move on. Taking this example, ठीक है, and giving you the thing. अच्छा, अभी हमने डिस्कस किया, let's rub this one out. Let's talk about this one alone. ठीक है, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको, if you really want to see the observe this particular weather, you need to have a probability distribution of that particular weather. यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये चीजें given these are independent events ना, तो therefore जब आप कहते हैं कि एक दिन का वेदर अपने बेसिकली प्रीवियस डे के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सो आई एम ट्राइंग टू व्हाट आई ट्राइंग टू से इज टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट, ठीक है, दिस इज गोइंग टू डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट गिवन द प्रीवियस इवेंट, ठीक है. तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो टोटली डिपेंड करती है बेसिकली दो चीजों के ऊपर. हम कहते हैं कि अगर आप एक खास इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग अ सनी डे ऑन द फर्स्ट डे will depend on probability of observing the sunny day today given that the previous event was something. So for example, अगर हम इसकी बात करें, सेकंड डे की बात करें, so the probability of observing a rainy day on the second day is, ठीक है, अगर मैं इसको P of R2 कर दूं, ठीक है, what is the probability of observing a rainy day on the second day? That is equal to, in this particular scenario, we say probability of observing rainy day on the second day given that the previous day, that is on the first day, it was sunny. इसके बराबर होगी, ठीक है. और जाहिर है क्योंकि सीक्वेंस ये है, इस सीक्वेंस में आप R पूछ रहे हो तो R will depend on the previous day only. ये फर्स्ट ऑर्डर मार्कov चेन है, यानी कि एग्जैक्टली अपने से एक पिछले सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसको हम कहते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर मार्कov चेन. तो अब आप probability of R2 initial probability of observing a rainy day on the second day is where we know that the first day was sunny, ठीक है, that is equal to probability of R2 given that the previous day was sunny, ठीक है ना. In this particular example where we are moving towards is observing, इस केस में आप देख सकते हो कि conditional है, this probability is conditional on something. Now it's not an independent probability. Probability of observing a particular is not independent anymore. लिहाजा जो ये probabilities है, these are not going to hold anymore because ये independent probabilities हैं, ठीक है. इनको सामने रखते हुए keep them here, ठीक है. But we need more probabilities. We need to know the probability distribution of actually observing a rainy day given the previous day was sunny. We need to know the probability of observing a rainy day given that the previous day was rainy. We need to know the probability of observing a rainy day given that the previous day was cloudy. Similarly, we need to know the probability of observing a sunny day given that the previous day was sunny, probability of observing a sunny day given that the previous day was rainy, and probability of observing a sunny day given that the previous day was cloudy. And similarly, probably you also need for probability of observing a cloudy day given that the previous day was sunny, probability of observing a cloudy day given that the previous day was rainy, probability of observing a cloudy day given that the previous day was cloudy. तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है we need this information, ठीक है. जब तक इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है we cannot calculate this anymore. Why? Now this weather is very different from what you are seeing here. क्यों? क्योंकि अब जब आप कहते हैं कि डिपेंडेंट हैं, इसका मतलब ये है कि now this is equivalent to probability of observing sunny day from start, ठीक है. Let's say start को मैं pi से represent कर देता हूँ, ठीक है. Pi is basically used to represent the starting probabilities, ठीक है. तो we need the probability of starting with the sunny day. So probability of S given pi हमें चाहिए, ठीक है. Pi is basically the starting day और starting day पे probability जो है वो sunny day से start में probability क्या है, ये है. Multiply it with probability of observing a rainy day given. अच्छा, एक और बात है, let's talk about this as well. The probability of, let's say, अगर मैं इसको let's say cloudy कर दूं, ठीक है. So let's make it cloudy, ठीक है. So can you tell me कि इस cloudy में
मतलब अगर if I want to find the probability of observing this cloudy given that this day was sunny and the probability of observing this cloudy given that the previous day was sunny, दोनों की probability में फर्क होगा? Actually नहीं, क्योंकि दोनों की दोनों जो हैं वो probability of cloudy given sunny है, which is the same value. लिहाजा आप इसको इस सीक्वेंस को स्टार्ट में रखो, इस सीक्वेंस को एंड में रखो, मिडिल में रखो, कहीं नहीं रखो, प्रोबेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू वही आती है, ठीक है? तो लिहाजा गोइंग बैक टू व्हाट इट वाज अर्लियर, ठीक है? What you need to know is कि अगर probability of given a particular day, a particular event, probability of observing that event, given that the previous event was something, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा जहां भी अगर करेगी the value will always be the same, ठीक है? लिहाजा the probability of R given S, अब इसको मैं the exact day does not matter, if it's the second day or the fifth day or something, doesn't matter. What matters is कि event क्या है और previous event क्या है. So we are independent of the order itself really. हाँ, current और previous इसके ऊपर हमारा सारे का सारा बेस है, ठीक है? तो जहां पे भी वो current और वो कर करेंगे, so probability of observing, for example, let's say if I put it something like, if I just change the order a little bit, लेकिन उसमें यही exact चीजें अगर हो रही होती तो probability में हमारे कोई फर्क नहीं पड़ना था, ठीक है? अच्छा, and then multiply it with probability of observing S given R multiplied by probability of observing S given S, ठीक है? Multiplied by probability of observing C given S multiplied by probability of observing S given C and multiplied by probability of ending on a sunny day, ठीक है? तो probability of E कर देते हैं given that the previous day was sunny. इसका मतलब ये है you start off with a particular day, ठीक है? You move on, सारे events निकालते गए और you end on a particular day. Typically ending on any day उसकी हमारे इतनी ज़्यादा importance नहीं होती. So we can kind of put this one, skip this one out completely, ठीक है? लेकिन you need to know that this does exist. We might want to end on a particular day, उसकी पास probability हो सकती है. So a first order Markov chain will talk about this thing. Markov chains, by the way, that concept is very old. It's early 1700s or 1800s. It's as early concept as that. However, इसमें जो जिद्दत आई है, this is very simple actually, ना? मतलब in the sense, it only talks about independent events and how you need to find probability of that. लेकिन इसकी जो असल जिद्दत है, इसमें जो असल enhancement आई है, that I'm going to say is going to be Markov models, hidden states, those concepts, और जब वो आते हैं तो that those become really interesting. So far we can actually see that for any observation for which we know the condition probabilities in any place, ठीक है? जहाँ पे भी sequence of things आएंगी वहाँ पे हम इसको use कर सकते हैं possibly. Night Bayesian भी थोड़ा सा इसी के ऊपर based है, so this is called something like that. लेकिन let me come to the interesting point. In this case, तो यहाँ पे मैंने represent किया हुआ है, I want to represent it graphically for you to see what it means, ठीक है? तो यहाँ पे जो concept है हमारे पास, मैं इसको थोड़ा रब करके I'll just go on with that. जो concept है बड़ा simple सा concept है, बड़ा मजे का concept है, ठीक है? If you realize this thing, I'll just keep these ones, ठीक है? I'll actually maybe rub this one, ठीक है? और अब एक और इंतहाई इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैं आपको देने लगा हूँ, which is about showing this thing graphically. यही चीज हम ग्राफिक्स में कैसे देख सकते हैं, ठीक है? So notice here हमारे पास तीन possible states हैं. One is sunny, rainy, and cloudy. So I can basically draw kind of three circles representing sunny, rainy, and cloudy. ठीक है? So मैंने तीन सर्कल्स बना दिए. अच्छा, तीनों सर्कल्स जो हैं वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि अगर प्रीवियस डे सनी था, there is a certain probability of starting in a thing जिसको मैं कह सकता हूँ मैं सिग्मा मैट्रिक्स, ठीक है? सिग्मा फॉर सनी, रेनी एंड क्लाउडी.
ठीक है, hope it's visible here. जी बिल्कुल विजिबल है, so I'll use that color. सनी रेनी क्लाउडी के लिए हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज हैं, you notice is basically let's say this probability of starting with a sunny day is 0.6. ये वाली दे देते हैं, ठीक है, just rainy with 0.2 and cloudy with 0.2. थोड़ा सा different कर लिए, but let's say these are the probabilities of starting with a particular day. So what is the probability that the first day is going to be sunny? The answer for that is it's 0.6. What is the probability of starting with a rainy day? It's 0.2. With a cloudy day, it's 0.2 again. ठीक है जी, तो यहाँ तक तो बहुत सिंपल सा काम है. I think that simple to this point. अच्छा, तीन states आपने identify किए. You identified that you can possibly have a sunny day or a rainy day or a cloudy day. ठीक है. So sunny, rainy, and cloudy are your three states. Next thing is, what is the probability of starting with a sunny day? वो आपने कहा 0.6 है, and so on. तीनों states का आपने again एक matrix दे दिया, which is a pi matrix, which states the probability of starting with a particular day. अच्छा, then you've got हर state से possibly आप हर दूसरी state में जा सकते हैं. In this case, although it's not necessary, but in this case that is true. So the probability of starting with a sunny day, and you know what is the probability of observing a rainy day given it as it was sunny will be mentioned by this arrow. So the probability of observing rainy day given it as it was sunny will be this arrow. इसकी उसकी probability जो भी है, ठीक है, let's call it probability of R given S. ये सब mention होगी, ठीक है. अच्छा, vice versa is also true. You know that, ठीक है. Probability of observing a sunny day given that the previous day was raining will be mentioned here. Similarly, we can have an arrow here, an arrow here. Sorry, it's incorrect. This one is correct now. An arrow here and an arrow here. Okay. Notice this is probability of observing a cloudy day given that the previous day was sunny. Probability of observing a sunny day given that the previous day was cloudy. Probability of observing a rainy day. Sorry, it's not rainy, it is cloudy day given that the previous day was rainy. Probability of observing a rainy day given that the previous day was cloudy. ठीक है, मैंने सिंपल क्या किया है, मैंने सारी स्टेट्स उठाई हैं, उन स्टेट्स के ऊपर मैं प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. इसमें एक चीज मिसिंग है. What about the probability of having a sunny day given that the previous day was sunny day? Again, आप लोग उसे डिस्क्रीट पढ़ चुके हैं, so you already know this part quite well. यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं, एक लूप बना सकते हैं, ठीक है. So this is probability of observing a sunny day given that the previous day was sunny. We can have a loop here. Probability of observing a rainy day given that the previous day was rainy. Probability of observing a cloudy day given that the previous day was cloudy. तो एक चीज मैंने आपसे बताई थी एग्जिट प्रोबेबिलिटीज की. What is the probability कि हम आखिरी दिन जो है खास चीज ऑब्जर्व करेंगे and then we will stop on that sequence. तो वो हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस ग्राफ को करना चाहें सिंपल एरो, ठीक है, या एक स्टेट बना लेते हैं. लेट्स कॉल इट द एंड स्टेट, ठीक है. सो दिस इज एंड स्टेट से जो है वो कुछ भी नहीं निकल रहा. नोटिस दिस थिंग, ठीक है. एंड दिस पर्टिकुलर स्टेट इज व्हाट आई कॉल द एंड स्टेट. की से मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं. And I'm going to say this is like saying probability of observing an end state given that the last state was S. Probability of observing a C state, cloudy state, given that the probability of observing E given that the last state was C, and similarly probability of ending with E given that the last state was R. ठीक है. अच्छा, यानी कि हमारे पास स्टार्ट स्टेट है, हमारे पास एंड स्टेट है. स्टार्ट स्टेट की प्रोबेबिलिटी मैंने इस मैट्रिक्स में शो कर दी है, ग्राफिकली शो करना है. तो पाई हियर, पाई स्टेट, तो पाई स्टेट से एस में भी जाएं, आर में भी जाएं और सी में भी जाएं, और उसकी प्रोबेबिलिटी उसके ऊपर लिखते हैं द सेम वे लाइक वी हैव मेंशनड ओवर हियर फॉर ई इन अ सिमिलर मैनर बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. तो स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटीज, एंड प्रोबेबिलिटीज और कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में हमने बहुत कोर्स से देख ली है. दिस इज a typical diagram of a first order Markov chain, जिसमें हम exactly एक previous state पे डिपेंड करें. अगर दो पे डिपेंड कर रही हो ना तो हमारी states बढ़ गई.
क्यों? then you can have sunny sunny, sunny cloudy, sunny rainy. Similarly cloudy cloudy, cloudy sunny, cloudy rainy, rainy sunny, rainy cloudy, rainy rainy. No states only. ठीक है, और वो previous two के ऊपर डिपेंड कर रहा है. In that case you not only need this matrix for basically starting with a particular state, you also need a matrix for starting of observing the first sequence as well. यानी कि आपने first two पे भी आपको पास होना चाहिए. What is the probability of observing a sunny day or the second day given that the previous day was sunny, sunny given cloudy, sunny, तो वो आपको उसकी combination पूरी चाहिए होगी. अच्छा, having said that, if this is what it is, starting ये आपके पास सारी probabilities हैं. हम first order की बात करते हैं, keep it simple. If you want to do more research on this, you need to see a higher order Markov chain exist करती हैं. But quite interestingly, ज़्यादातर applications जो हैं वो single order Markov chain करती हैं. I think this is the concept itself is very simple. कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज के ऊपर बेस्ड है. अगर आपको ये इस पर ग्राफिकल कंडीशन बनानी आ जाती है तो द लाइफ बिकम्स मच सिंपलर फॉर यू. ठीक है, अगर आप ये ट्यूटोरियल उठाकर देखें जिसका मैं जिक्र कर रहा था शुरू में, सो इट स्टार्ट्स ऑफ वेरी वेल. आप आई थिंक अब आपका बेसिक बन चुके हैं, सो आई विल टेक दिस वन. And again, although initially introduced and started in the late 1960s and 1970s, statistical methods of Markov source or hidden Markov modeling have become increasingly popular in the last several years. So 89 का पेपर है by the way, so this is a really old one. ठीक है, and like I said, इसका जो boom था वो 90s तक था. 90s के बाद Markov chains have somehow lost, people have lost interest in them, or they're still very applicable and maybe very, let's say, इसके research actually खत्म हो चुकी थी research के perspective से, but it is still very commonly used for inferring some certain things. अभी जिसमें आपको हम देखेंगे sequence of events जब भी करेंगे और उसमें हम hidden state उसकी निकालना चाहेंगे. For example, let's say हम weather की बात अगर करें, ठीक है, तो let us suppose कि आप ओला की सेल से you can determine कि which weather it is. ठीक है, अगर मैं आपको हर 6 महीने का एक ओला की सेल्स के नंबर बताऊं, ठीक है, तो you can kind of infer if it is summer or winters. ठीक है, so that hidden thing, the weather is hidden there. हम उसकी concept पे आएंगे and we'll talk about that soon. लेकिन so far the important thing here is जब ये introduce कर रहा है तो ये introduce heterogeneity example से करता है. ठीक है, और इससे एक छोटी सी एग्जांपल दी है जिसमें Markov chain को explain कर रहा है with 5 states. तो 5 states हैं, आप देख सकते हैं. This is the figure it talks about. I'll just focus on this figure. ये जो figure है, ठीक है, इस पे में ये बेसिकली मार्कov चेन की बात कर रहा है जिसमें 5 स्टेट्स हैं. हमने जो यहाँ पे ड्रॉ किया है, दिस इज द सेम थिंग बट रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ 3 स्टेट्स. और रिप्रेजेंटेशन के लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग नॉमेनक्लेचर यूज किया है व्हिच आई आल्सो लाइक टू यूज. ये इसको बेसिकली ए के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है. नोटिस कि ये ए के साथ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. हर एक प्रोबेबिलिटी को इससे ए और 3 1 a. फॉर एग्जांपल the S here represents the state. ठीक है, S is the state, A is the probability of observing a particular event in that. So for example, A32 over here, A32 जो ये mention कर रहा है, I'll not draw it on board because it takes a lot of time, but A32 जो है, for example, that is referring to the probability of moving to state 2 from given that the last event was 3. तो इसका order जो है ना बड़ा important है. Observing state basically moving from state 3 to 2. इसका order जो है ना ये याद रखना है कि 3 to 2 यानी कि 3 is the previous state, 2 is the next state. और probability of observing 2 given that last state was 3 is given by probability by A32. Order इसका बहुत important है. So anyway, these are some kind of notations. और एक important जो application है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे. वो बेसिकली कहता है कि अगर आपने probability of Q, ये जो इक्वेशन है, this equation, ठीक है, the equation 1 here defines the first order Markov chains, the probability of observing a particular sequence of events. ठीक है, अगर आपने ढूंढने हैं तो उसमें जो फर्स्ट इवेंट है probability of Q1 वो डिपेंड करेगा probability of Q1 given यानी स्टेट T पे है given that the previous जो स्टेट थी वो
QT -1 आपके ऑब्जर्व हुई है, ठीक है। तो एक करके कम करता जा रहा है। इन अदर वर्ड्स, लेट्स लुक एट इट। Probability of observing a particular sequence of event QT is equivalent to multiplying probability of QT, जो last event ST है, state T है ST, given that the previous events, the sequence of events, उनकी probability जो है वो probability of QT -1 है, ठीक है। And this goes on and on. Anyway, इससे confused now, I think we'll simplify it even further. The next step, तो हम सिंपलीफाई करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस इवेंट ना, अगर फर्स्ट ऑर्डर मार्कऑफ चेन की हम बात करें। In that case, this thing simply comes out to be what we call probability of ST given the previous state was ST -1, and then multiplied with probability of observing ST -1 given that the previous state before that was ST -2, and so on until you basically reach the probability of S2 given the previous state was S1, and multiplied by probability of observing S1 on the starting day. Okay. So that's the whole equation over here. It has mentioned that, detailed that, ठीक है। और precisely अगर आप देखें तो इसने वही रेनी सनी क्लाउडी की example ली है over here, as you can probably see, ठीक है। So this is rainy sunny cloudy, उसकी probability distribution आपको पूरी दी हुई है। What is the probability of observing rainy day given the previous day was something so and so forth, AJ की फॉर्म में उसको exactly यहाँ पे mention कर रहा है, ठीक है। And then it goes on and moves on to the thing which is mentioned over here, जो मैंने कहा था, what is the probability of observing particular days given the model, ठीक है। तो मॉडल के होते हुए अगर आपको मॉडल मालूम हो, आपको पता हो कि ये probability distribution है, simply you need to calculate them and multiply them together, so यहाँ पे वो कर रहा है, ठीक है। Probability of S1, S2, S3, S4, S5 for particular things, particular states को observe करने की probability क्या है? Simply starting, what is the starting probability multiplied with the probability of dependent or conditional probabilities, इस तरह को यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो conditional probabilities के साथ वो multiply करता जा रहा है, nothing else going on over here. अच्छा, इसके बाद अब आ जाते हैं नोटेशन के ऊपर। तो नोटेशन जो है, जो स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, इसमें मैंने आपको कहा कि इसमें पाई का इस्तेमाल होता है, तो इसमें अगेन पाई का मैट्रिक्स यहाँ पे, दिस इज इक्वेशन 4, जिसमें कि पाई का मैट्रिक्स वो आपको बना के बता रहा है, या इट शुड बी गिवन, ठीक है। नोटेशन का खास आपने ध्यान रखना है, ए, कैपिटल ए इज द ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, कि बेसिकली एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम कैपिटल ए से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और बात अभी मार्कऑफ चेन्स की हो रही है, मार्कऑफ मॉडल्स पे जाएंगे, लेकिन मार्कऑफ मॉडल्स पे इट माइट बी स्लाइटली डिफरेंट, सो वी विल हैव टू ऑब्जर्व दैट डिफरेंटली। मार्कऑफ चेन्स के अंदर ए इज योर ट्रांजिशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, पाई इज योर स्टार्टिंग मैट्रिक्स एज यू हैव सीन हियर, ठीक है। ओ इज योर ऑब्जर्वेशन, ओ इज टिपिकली रिटन फॉर द सीक्वेंस दैट यू ऑब्जर्व, ठीक है। सनी सनी सनी, क्लाउडी क्लाउडी क्लाउडी, व्हाटएवर सीक्वेंस यू वांट टू ऑब्जर्व, उसको आप ओ से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन फाइनली यू हैव गॉट अ वेरी पर्टिकुलर थिंग, द टिपिकल क्वेश्चन दैट यू आर आस्क्ड इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग ओ गिवन द मॉडल एंड पॉसिबली द स्टार्टिंग स्टेट्स, ठीक है। तो आपको मॉडल मालूम है, आपको जो है वो स्टेट्स का सीक्वेंस मालूम है, उसको आपने मालूम करना है, सो दैट इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज एंड द स्टार्टिंग प्रोबेबिलिटी, नथिंग एल्स। तो ये उसको समराइज किया हुआ है इन इक्वेशन 5, आप इक्वेशन 5 यहाँ देख सकते हैं, इक्वेशन 5 में उसने उसी चीज को, उसी पॉइंट को समराइज किया हुआ है। ओके, देन मूविंग ऑन, उसने उसी को एक्सप्लेन किया, व्हाट इज दिस प्रोबेबिलिटी, हाउ डू यू गेट दिस प्रोबेबिलिटी, प्रोबब्ली नॉट सो इंटरेस्टिंग फॉर अस, ठीक है। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपने एक ही तरह के इवेंट्स को कंटिन्यूअसली अगर ऑब्जर्व करना है, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल यू से कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग सनी कंटिन्यूअस सनी डेज फॉर 7 कंटिन्यूअस डेज, 7 दिन मुसलसल धूप रहेगी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? The answer to that would be the probability of observing a sunny day given a sunny day for 6 consecutive days, right? 6 दिन sunny given sunny की probability आप निकालें, उसको multiply कर लें, so probability of sunny given sunny को raised to the power 6 कर लें, multiplied by the probability of starting with the sunny day. तो 7 दिन consecutive, अगले 7 दिन धूप रहेगी,
कंसेक्टिवली इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, गिवन कि आपका पहला दिन जो है जो आप स्टार्ट कर रहे हैं वो अगला दिन जो पहला दिन है सनी डे होगा, उससे स्टार्ट करें. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी गिवन सनी रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी. ये एग्जैक्टली उसी चीज को एक तरह से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है. दिस इज इक्वेशन नंबर 5 आई गेस. ठीक है, सो 5 के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं उस चीज को उसने एक्सप्लेन किया होगा. ओके, तो बड़े इंटरेस्टिंग बड़े मजे के इसकी एप्लीकेशंस हैं. पॉसिबली बड़े छोटे छोटे सवाल हैं जिसको आप मेन मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी से कंडीशन प्रोबेबिलिटी से बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर लेते हैं. Then it goes on to extending this to hidden Markov models. अच्छा, मेरा ख्याल है कि मैं आज के लेक्चर को इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं रोकूंगा. अब आपको मार्कov चेन्स की कंप्लीट समझ है. ठीक है, नेक्स्ट पे हम स्टार्ट करेंगे हिडन मार्कov मॉडल से. उसमें हिडन कलर्स क्या है, उसमें मार्कov मॉडल्स क्या हैं, मार्कov चेन से इसका ताल्लुक क्या है, उसमें स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें ट्रांजिशन के साथ फिर एमिशन प्रोबेबिलिटीज भी आ जाएंगी, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, हिडन मार्कov मॉडल्स के डिफरेंट एल्गोरिथम्स क्या हैं, हम इन सबको इन डिटेल स्टडी करेंगे. लेकिन फॉर नाउ आई थिंक दिस इज गुड इनफ. अगर एक लेक्चर में आप करना चाह रहे हैं तो मार्कov चेन्स तक आपको आई होप कि कंप्लीट समझ आ चुकी है. टू अंडरस्टैंड व्हाट मार्कov चेन इज, व्हाट इट डज, व्हाट इट इज यूज्ड फॉर. The language that I've used is intentionally Urdu for most of this lecture because I really wanted you to understand the concepts here. However, if someone is not comfortable in Urdu, I've kind of translated each and every time into a corresponding English statement as well. But as far as I know, you audience, you're all comfortable in the language, so I'm not going to go in, and talk about maybe the concept in English anyway. I hope if it is, but at the same time, if something is still unclear from this lecture, feel free to contact me and ask me the questions, and I can try and explain them in English to you. Because I know in the next classes and then in the next batch after you, probably batch 30, sorry, not batch 29, batch 30. I know a student who is only comfortable in English. He does not know Urdu. So for that reason, I am kind of, I'm still giving this option that if you want to understand these things, the concept of Markov chains, the word of Markov chains, you can always come to me and ask me, and I can give the corresponding explanation in English, number one. Number two, there are so many applications of this thing, not only on weather, not only on sales of particular product. Wherever you have got a sequence occurring, you can kind of use the Markov chains to identify the probability of that particular sequence, right? So for example, we could always go on to the sales of particular ice cream brand, for example. So what is the probability that a person goes and buys Cornetto and let's say Choco Bar and other typical bars. What is the probability that a person goes and buys 7 consecutive Cornettos on 7 different days? And that's the sequence again. So given the probability of buying a particular thing that is maybe independent or dependent, if it is dependent, it will become a Markov chain. If it is dependent exactly on one previous in sequence or input, then it becomes the first order Markov chain. If it is dependent on more, then it becomes a second order Markov chain, and so on. So that is the overall summary of, I would say, of this whole lecture. You could take any example. I took ice creams. You could took a biological sequence, for example, observing a particular sequence there. Probability of buying a particular thing on 7 or 8 consecutive days. Probability of different persons coming to the bookshop and selecting a particular book, a Harry Potter book, for example. What is the probability of that? Everything. If you know the model, if you know the probabilities, if you have the conditional probabilities defined for you, you can always infer the probability of that particular sequence of events, and that can help you in your business. Maybe you can know that if it is summers, for example, you already know that there will be high demand for kulfis. There will be high demand for cold drinks, and
you kind of know that, given in the previous day you sold 100 bottles of cold drinks, what is the probability, what is the number of cold drinks that you're going to sell on next day will depend on the model, but it will probably be close to 100, right? And it should go in a sequential way like that, and then up again, depending on the the lowest and the highest. And the population, many of the metrics, however, we are kind of neglecting the other options here. Like, for example, the weather one, in the example that we saw over here, we're neglecting the global warming, number one, we're neglecting the season in which it is occurring. So if it is a rainy season, this is going to have a different model. If it is a like these days, it hardly rains and it's sunny, followed by sunny, followed by sunny. It's really warm outside there. So for that reason, you need to kind of know the model. The model itself is very important. Anyway, that's the overall summary here. I would say a very brief introduction, a very concise introduction to hidden Markov. Sorry, not hidden Markov models, but basically Markov chains, conditional probability, probability itself, graphical representation of our beautiful little Markov chain. And in this case, I would like to say that this one here is, of course, I'm not using the standard notation. Standard notation is the exact one that is utilized in this paper, right? And precisely, this is the graphical representation that I talked about. So you need to follow this one more. But for now, for me, for this paper, I am more comfortable in using this one. So you could use this one as well. Both are used in literature. This one is more commonly used. You know this very well. But this one is more clearer and maybe perhaps preferable for me. Anyway, so at the end, I'd like to thank you all for listening to the lecture on Markov chains. From next lecture, we continue on with hidden Markov models, and I think there will be 2 or 3 more lectures after that, based on bitree algorithm, forward backward algorithm, and their utilization and their importance. But for the next time, at least, we're talking about hidden Markov models, with what is hidden, what is our Markov model, and how we build up our hidden Markov model along with its notations. So thank you very much for listening. See you in the next lecture. Take care. Allah Hafiz.